we discuss career problems on Coulomb's law. First problem, two identical spheres having charges 8 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are kept at certain distance. Now they are touched and after that again kept at same distance. Compare the force in both cases. Okay. So first देखो initial charge केते अछि 8 microcoulomb, second अछि -4 microcoulomb q1 q2. यदि आइडेंटिकल स्फीयर को आइडेंटिकल चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट रे आनिबा डिफरेंट चार्ज बॉडी को देन चार्ज विल बी शेयर. अधिक चार्ज जो बॉडी थिबो से फ्लो कर जो लोअर बॉडी चार्ज को इक्वल हवा जाए. दैट मीन्स फाइनल चार्ज केते हे गला दिटा के इनिशियल चार्ज केते थिला 8 -4 तो q1 plus q2 by 2 that is 8 -4 by 2 so 2 microcoulomb is final charge on each body. Then first equation होची q1 q2 by r square initial force final force केते होची q1 dash q2 dash by r square distance same होची so f1 f2 को जदि हम रिलेट करे दबा रेशियो नै जिवा फाइनल केते करे 8:1. okay first problem completed. Next, the force between two point charges in air is 100 Newton. Calculate the force if the distance is increased by 50%. So first initial distance को let हम निजवा r. Final distance केते बढ़ी गला ना 50% of r means r by 2 that is 3r by 2. The initial force f1 is k q1 q2 by r1 square. Final force f2 देखो ये केस रे चार्ज सेम अछि तो q1 q2 by r2 square. तो f1 by f2 square is equal to चार्ज सेम अच्छी कैंसिल हो कन्स्टांट दुटा कैंसिल हो r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर सो 3r2 by 2 square by r square that is 9/4. So given f1 is 100 Newton, we are given f1 100 Newton. So f1 by f2 is 100 Newton, that is f2 is equal to 4f by 9, that is final answer is 44.4. okay. Next sheet को जीवा. See how the important problem देखो two identical conducting spheres p and s गोटे अछि p आ गोटे अछि s. एट देखो p द चार्ज q identical charge अछि identical sphere भी अछि with charge q देछि on each repel each other with a force f. तापर सेकंड पचार छी आ गोटे थर्ड अनचार्ज बॉडी को लेट्स से होछि r which successively brought माने फर्स्ट p को कांटेक्ट करिवे तापर r टा को आनि कि s से तो कांटेक्ट नबा फाइनल तांका भीतर फोर्स केते आसीबो. Now when r is brought in contact with p charge q is equally distributed means ए जो चार्ज q टा थिबो देखो एठी p और r चार्ज टा इक्वली शेयर हे जो मींस q plus 0/2 that is q by 2. again r को आनि कांटेक्ट रखिबा s रे then r चार्ज केते हे q by 2 एटा ला q so final charge केते हे जो on s again charge share हे जो q plus q by 2 that is 3q by 4. so final charge on p q by 2 and s is 3q by 4. तो initial force ର formula this is final force ର formula charge को vary करियो distance same अछि then डेटा रेशियो नै जिवा 3:8 बा final force is equal to 3/8f. I can note it. Next, a question भी important question day. A certain charge q divided into two parts. How the charges are related so that they experience maximum force. Means दीटा चार्ज बॉडी अच्छी ताको हम एमिति डिवाइड करिवा आ गोटे गिवन डिस्टेंस रखिवा सो दैट तांका भीतर फोर्स टा मैक्सिमम हो. इट डेरिवेटिव रो मैक्सिमम प्रिंसिपल यूज हो. देखो लेट चार्ज ने गोटे डिवाइड कले गोटे हला q गोटे q minus q द डिस्टेंस होची x फोर्स पाई गले एतिकी k q minus q by x square. Then here force is the function of x means force f is the function of charge q means a charge ऊपर डिपेंड करूची फोर्स रे वैल्यू. देन a फोर्स f टा जन हम डेरिवेटिव रे जानि छे dy by dx is equal to 0 maximum principle सेमती एटी df by dq is equal to 0. Here force f is the function of q so df by dq is equal to 0 for maximum force. Then df by dq is equal to 0. Here x k constant the derivative now with respect to charge small q then q
क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर क्यू माने ये कन्स्टांट अच्छी ये क्यू वन डेरिवेटिव क्यू होगा माइनस 2q इक्वल सो मन रख यहाँ चार्ज को आम जब इक्वली डिवाइड करवा माने हाफ करदे 50% डिवाइड करवा देन मैक्सिमम फोर्स होगा एट एनी डिस्टेंस। नेक्स्ट a charge q is placed at the center of the line joining to charge q so that the system of three charges will be equilibrium। क्वेश्चन होची आमे केते गोटे चार्ज क्यू को ए दुटा चार्जर सेंटर रे रखिबा से सिस्टम इक्विलिब्रियम अछि हाँ क्वेश्चन होची दुटा चार्जर अछि गोटे कैपिटल क्यू और गोटे कैपिटल क्यू आ गोटे चार्ज को क्यू को आमे जदि मिड पॉइंट रखे नो डाउट ये फोर्स एफ एक्सर्ट करिवो ये भी फोर्स एफ एक्सर्ट करिवो देन ये सिस्टम टा इक्विलिब्रियम रहइबो। सिस्टम इक्विलिब्रियम रहिले देन से पचार थिवो ए क्वेश्चन रो इंपोर्टेंट होची जे ए जो वैल्यू स्मॉल क्यू रो वैल्यू टा केते होबा दरकार इन टर्म्स ऑफ क्यू बाहर करिवा। सिचुएशन बुझियला आउथरे कहूची दुटा चार्ज अछि तांको तो डिस्टेंस आर मिड पॉइंट रे गोटे चार्ज को रखिले ये सिस्टम इक्विलिब्रियम रहबो। मिड पॉइंट रे काहे रखिबो ना ये जति फोर्स एक्सर्ट करिवो ये भी सेति फोर्स एक्सर्ट करिवो सो दैट ये चार्ज इक्विलिब्रियम रे यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी 0। सो आम जेकोन से गोटे चार्ज को कंसीडर करिवा लेट दिस चार्ज फोर्स ऑन दिस चार्ज केते आसीबो दुटा फोर्स आसीबो इंडिविजुअली गोटे स्मॉल क्यू गोटे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू रिपेल करिवो ए डायरेक्शन रे बा स्मॉल क्यू मैग्नीट्यूड जान नांती आम ए दुटा को फोर्स नै जवा देन एक भीतर केते आछी k q by r by 2 रो स्क्वायर देन ये फोर्स देखो ये चार्ज भी फोर्स एक्सर्ट करिवो k q by r स्क्वायर डिस्टेंस देखो आंक भीतर डिस्टेंस r by 2 आंक भीतर डिस्टेंस होची r इक्वल टू 0 सॉल्व कला पर q पाइबा माइनस q by 4।